हम नौजवान हैं। पीरों के उस्ताद हैं हम 2 कदम आगे हैं। हम नई नस्ल हैं। हम शाहीन हैं। हम मुस्तकबिल हैं। नौजवान ताकत हैं, जज्बा हैं, ये एक नई दुनिया का हिस्सा हैं और इस दुनिया में हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। मैं अपने प्रोफेशन में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी औरतों को बराबर के मौके ना मिले। आज मैं अपने जैसी बहुत सी यंग खवातीन को देखती हूँ जो कौम और मईशत के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। नौजवान जिद्दत के साथ अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए नई मंजिलों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ साजगार माहौल की। नौजवानों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और माजूर नौजवानों को खास तौर पर, लेकिन हमारी ताकत हमें आगे बढ़ाती है। हम कभी हिम्मत नहीं हारते। रिवायती तौर पर नौजवानों को सीरियसली नहीं लिया जाता। This has to change. नौजवानों के पास बेहतरीन आइडियाज हैं और कोशिश करते रहने का जज्बा है। मेरी तरह अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान भी बाकी कौम की तरह मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़म हैं। Pakistan is the second youngest country in Asia with around 68% of its population below the age of 30 years. It is sad to note that Pakistan's position in the Commonwealth Global Youth Index declined from 89 to 154 over the last 5 years. To address this critical plight of youth, PTI government has decided to start game-changer initiatives for the socio-economic development of youth under the aegis of Prime Minister's Kamyab Jawan program. Kamyab Jawan program focuses on 3 E's: education, employment, and engagement. The 3-pronged approach of Kamyab Jawan program is placing youth as an asset at the center of the national agenda for development. This is directly reflective of the role of young people envisaged for sustainable development in the context of 2030 Agenda for Sustainable Development for achieving a sustainable, inclusive, and stable society. The strategy for Kamyab Jawan program also addresses issues related to gender equality, good health, reducing inequality, combating poverty and hunger, and action on environmental issues and climate change. The Strategic Youth Development Roadmap of Kamyab Jawan identifies clear short-term, medium-term, and long-term actions to impact the 3 overarching themes. In short term, setting up National Youth Development Framework (NYDF) by consulting all the provincial and regional stakeholders, National Youth Council, thematic area mapping, and PM's Youth Plus portal were identified as the most significant steps. In the medium term, implementation of Prime Minister's flagship initiatives such as Prime Minister's Youth Entrepreneurship Scheme, Prime Minister's Skill for All Program, Prime Minister's Startup Pakistan Program, Prime Minister's Green Youth Movement Clubs, Prime Minister's Internship Program, Prime Minister's Jawan Markaz will be introduced. In the long term, to make these interventions sustainable, Kamyab Jawan program will put in place mechanisms for National Youth Development Index and institutionalization of these initiatives into legislation. For the first time in the history of Pakistan, the government has also notified a 33-member National Youth Council of outstanding young leaders in order to engage and empower them in youth-related policy making. As Pakistan achieves a great milestone internationally with its overall ranking in the ease of doing business category improving, Kamyab Jawan program under the vision of Prime Minister Imran Khan is certain to provide Pakistani youth the enabling environment they deserve. Kamyab Jawan, Kamyab Pakistan.